स्टार्ट विद टाइप 3 बेटा. आई जस्ट वांट टू डिस्कस वन लॉ. बेटा अब तक हम लोगों ने ये लॉ मैंने अप्लाई भी किया है और यूज भी किया बहुत सारी जगह पे. ठीक है. a रेज टू m इंटू a रेज टू m हुआ विद द सेम बेस मल्टीप्लीकेशन. हम लोग पावर को क्या करते थे, ऐड. तो मैं इसको रिवर्स लॉ भी अप्लाई कर सकता हूं. तो अगर मेरे को कोई बोले a रेज टू m प्लस n, तो मैं बोल सकता हूँ ओके a रेज टू m प्लस n इज ऑल्सो मेड अप ऑफ a रेज टू m प्लस है इसे इंटू a रेज टू n. यूजिंग सेम फिनोमिनन जस्ट टेल मी 9 रेज टू n प्लस 1 क्या होगा. 9 रेज टू n इंटू 9 रेज टू 1. 27 रेज टू n प्लस 2 क्या होगा. 27 रेज टू n इंटू 27 रेज टू 2. 5 रेज टू a प्लस 2 क्या होगा. 5 रेज टू a इंटू 5 रेज टू 2 बेटा. So we are going to use this logic in our next type 3. Fine beta. Let's start the first sum. गाइस देखो 3 इंटू 9 रेज टू n प्लस 1 था. तो 9 रेज टू n प्लस 1 को कैसे लिखा. 9 रेज टू n इंटू 9 रेज टू 1. 3 रेज टू 2n प्लस 3 को कैसे लिखो. 3 रेज टू 2n इंटू 3 रेज टू 3. 9 रेज टू n इंटू 9 रेज टू 1. नाउ फोकस ऑन द नंबर विथ पावर n. तो 3 9 जा 27 एंड 9 को कैसे लिख सकता हूं. 9 रेज टू n को कैसे लिख सकता हूं. 9 इज नथिंग बट 3 रेज टू 2 और विथ n. थ्री इंटू 3 क्यूब. 3 क्यूब होता है 27. 27 थी 81. 9 रेज टू n को अगेन मैं 3 रेज टू 2n लिख सकता हूं. ठीक है बेटा. सो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो आपको 3 रेज टू 2n दिख रहा है सब जगह पे बेटा. सो विल टेक 3 रेज टू 2n कॉमन. विल टेक 3 रेज टू 2n कॉमन बेटा. आई टेक 3 रेज टू 2n कॉमन एंड आई एम लेफ्ट विथ 27 माइनस 9. नीचे भी 3 रेज टू 2n कॉमन. आई एम लेफ्ट विथ 81 माइनस 9. वी आर लेफ्ट विथ 18 by 72 which is 1 by 4. And that's your answer. Hope so you got it beta how to do it. I want everyone to try next couple of sum on your own. मैं भले सॉल्व कर रहा हूं बट आप लोग भी खुद ट्राई करोगे बेटा. That will boost your confidence. Second sum. 3 raised to a plus 2 minus 3 raised to a plus 1 upon 4 into 3 raised to a minus 3 raised to a. So 3 raised to a plus 2 को कैसे लिखूंगा. 3 raised to a into 3 raised to 2 minus 3 raised to a into 3 raised to 1 upon 4 into 3 raised to a minus 3 raised to a. 3 raised to a आपको कॉमन दिख रहा है बेटा. मैं और एक स्टेप लिख देता हूं. 9 into 3 raised to a minus 3 into 3 raised to a 4 into 3 raised to a minus कुछ भी नहीं ऐसे 1 into 3 raised to a. So you observe 3 raised to a. You observe beta 3 raised to a. बच्चा you observe 3 raised to a at multiple positions. हम लोग 3 raised to a को कॉमन लेंगे फिर ही कैंसिल होगा. You cannot directly cancel. You have to take common बेटा. So 9 minus 3, 4 minus 1. On the same line, I insist third one आप लोग खुद ट्राई करो. Very interesting sum.
इधर कौन सा टर्म कॉमन है बेटा? 5 raised to n, तो हम लोग 5 raised to n को कॉमन लेंगे बेटा। प्लीज ट्राई टू डू नेक्स्ट 3 सम्स ऑन योर ओन गाइस। 1 2 3 को ऑब्जर्व करो, ये वीडियो को पॉज करो गाइस। बट आई इंसिस्ट ये वीडियो को पॉज करो एंड देन ट्राई टू डू द रिमेनिंग 3 सम्स ऑन योर ओन। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, वेरी इंटरेस्टिंग सम्स गाइस। दिस सम्स यू कैन नॉट स्किप। बेटा 8 क्या होता है? 2 raised to 3 होता है। पहले ये 2 raised to 11 है और 2a को सब्ट्रैक्ट कर लेते बेटा। सो वी गेट 2 raised to 9a इंटू 2 raised to 5 इंटू 2 raised to 2a अपॉन 2 raised to 2 इंटू 2 raised to 9a। 2 raised to 9a got cancelled. You're left with 2 raised to 5, 2 raised to 2a upon 2 raised to 2. So 5 minus 2 into 2 raised to 2a. 2 raised to 3 into 2 raised to 2a. With the same base power को add. So that's your answer. But 5th and 6th, very important. But 3 into 27 raised to n plus 1. So can I write 27 raised to n into 27 raised to 1 plus 9 into 3 raised to 3n into 3 raised to minus 1 upon 8 into 3 raised to 3n minus 5 into, but 27 is 3 cube, तो 3 raised to 3n. 27 थ्रीजा हो जाता है 27 थ्रीजा हो जाता है 81। 27 raised to n को मैं लिखूंगा 3 raised to 3n प्लस बेटा 9 इंटू 3 raised to minus 1 क्या होता है बेटा? 9 इंटू 3 raised to minus 1 क्या होता है? खाली 3 बाकी रहेगा। नीचे 8 into 3 raised to 3n minus 5 into 3 raised to 3n. I can take 3 raised to 3n common beta. I am left with 81 plus 3. I take 3 raised to 3n common. I am left with 8 minus 5. 84 upon 3 which is 28. Okay. Very nice sum. We have observed this sum is asked in one of your school exams also. So please make sure you understand this sum very well. Okay. Beta, many people feel this is 5.7. No beta. 5 into मल्टीप्लीकेशन को डॉट से रिप्रेजेंट किया है। सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट्स लाइक ए बी रेस टू एम हुआ तो हम लोग क्या करते हैं? ए रेस टू एम और बी रेस टू एम करते हैं। वैसे ही ये 5 इंटू 7 रेस टू एन पावर में 3 है, इसको मैं 5 रेस टू 3 इंटू 7 रेस टू 3 एन होगा। 5 रेस टू 3 और 7 रेस टू एन को भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, प्लीज ये मेजर मिस्टेक मेनी पीपल मेक, सो आई थॉट आई जस्ट ब्रीफ यू अप विद दिस पर्टिकुलर पार्ट। डोंट मेक दिस मिस्टेक।
डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन। बेटा 7 स्क्वायर इज 49, ये दोनों मिला के 7:3n हुआ। 125 इंटू 7:3n माइनस 25 इंटू 7:3n। 7:3n कॉमन, 1 प्लस 49, 7:3n कॉमन, 125 माइनस 25, 50 अपॉन 100, 1/5। Hope so everyone got it, beta. One more sum, last sum of this type. Just give a try on your own. Very easy sum. I want you to try that sum on your own. Please pause video and try to attempt question number 4, 5, 6 on your own. And the last question for the day, for the session. बेटा 4:10 कॉमन लिया, बाकी क्या रहा 256 क्यों 4:4 is 256 माइनस 5 into 16 80। 4:10 got cancelled, 176 upon 44 which is, बेटा ये 80 कहां से आया 5 into 4 square guys, ये 5 है और 4 स्क्वायर 16 5 80 होता है, और ये 256 कहां से है बेटा 4:4 से। Hope so you have understood this type. Hope so you have understood this session. I want you to go through this type, all the types, all the sums one more time, and please make sure you solve. I'll come up with a new video with the remaining types of indices. Thank you so much.